हाय हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होगी। अभी एक चैप्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में। तो प्लीज़ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाइएगा। ओवरऑल ये चैप्टर पूरा करके जाने की कोशिश करना, पर फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हु कैन सेट अप एसईजेड जरूर पढ़ के जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है। एसईजेड कैन बी अ पब्लिक प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर अथॉरिटी। फॉरेन कंपनीज भी सेटअप कर सकती है। बहुत डिटेल प्रोसीजर चाहिए तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल प्रोसीजर्स भी हमने कवर किया हुआ है कि एसईजेड को सेटअप कैसे किया जा सकता है। बट हु कैन सेटअप एसईजेड इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और डिटेल प्रोसीजर्स भी एक बार देख के चले जाना कि सेक्शन 3 के हिसाब से एसईजेड सेटअप करने का तरीका क्या है। वेल, एसईजेड सेटअप करने का तरीका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड अलाउ करता है। जो पर्सन एसईजेड को सेटअप करता है वो डेवलपर है। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी एसईजेड सेटअप कर सकता है। दोनों ही पर्सन, चाहे डेवलपर या स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ अप्रूवल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन लेने के बाद ये डिसाइड करता है कि एसईजेड अलाउ करेंगे कि नहीं। अगर एप्लीकेशन डेवलपर का आया है तो डेवलपर के बाद स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है और फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल इस चीज़ को अलाउ करता है। अगर एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट का आया है तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिर अलाउ किया जाता है कि इस जगह पे आपका एसईजेड हो सकता है। ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ अप्रूवल के रिकॉग्नाइज अप्रूवल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कंसिडर करते समय यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंसिडर करते समय कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है और उस डेवलपर या स्टेट गवर्नमेंट को वो अप्रूवल फिर प्रोवाइड करता है। उस अप्रूवल को मिलने के बाद अगर स्टेट को मिला है तो वो एक अप्रूवल को डेवलपर्स को देती है जो वहाँ पे एसईजेड बनाते हैं, या डेवलपर्स खुद, जैसे एल&टी और अदानी, दे कुड बी डेवलपर्स ऑफ द एसईजेड। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट भी देख लेना। एस्टेब्लिशमेंट, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एसईजेड। सेक्शन 4 बोलता है कि जो भी डेवलपर है जिसके पास ये अप्रूवल आ चुका है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, वो एसईजेड को बना सकता है, एसईजेड को एस्टैब्लिश कर सकता है, उसको ऑपरेशनलाइज करते हुए वहाँ पे वो डेवलपमेंट कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकता है और ये सब मिलके एसईजेड को चलाते हैं। ठीक है, उसके साथ ये भी ध्यान रखना व्हाट आर द वेरियस इंसेंटिव्स विच इज गिवन फॉर एसईजेड। एसईजेड को क्या क्या फायदे हैं। 100% एफडीआई मिल जाती है, इनकम टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है समथिंग लाइक 10 to 15 ईयर्स। ड्यूटी फ्री डोमेस्टिक जोन्स में सर्विस टैक्स और सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। एंड देन इनकम टैक्स से काफ़ी हद तक यू कैन से एग्जेम्पशन मिल जाता है। और इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिविजुअल्स करते हैं एसईजेड को प्रिविलेज भी मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने को, पार्ट जनरेशन, फ्री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कई सारी चीज़ें एसईजेड को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? सो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। एंड देन हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर का फंक्शंस क्या है, इसे भी देख के जाना। तो डेवलपमेंट कमिश्नर क्या है, वो उसके फंक्शंस क्या है। वेल, उसके फंक्शंस में जैसे इज अ गाइड, he guide the entrepreneurs to setting up the SEZ कैसे करना है। He ensures that the suitable steps are taken for promotion of SEZ. He ensures proper coordination is done with the central government. He monitors the performance of the developers. He discharges such other functions as may be required. He discharge and development commissioners can call upon the informations from the developers of the SEZ. तो ये कुछ उसके functions हैं। देन उसके साथ साथ अप्रूवल कमिटीज़ जो होते हैं, तो व्हाट आर दी पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द अप्रूवल कमिटी। तो याद रखना इसमें दे अप्रूव द इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिफ एरियाज एंड द approve the providing of services by the service providers from outside the area or the domestic tariff area. They monitor the utilization of goods. They approve, modify, and rejects the proposal of setting up of SEZs or units in the SEZs, and they allow the receipt and approval of the foreign collaborations or including that of foreign direct investments. They allow the receipt of they monitor and supervise the compliances on the conditions which is as per the letter of approval or the permission which was granted to the developer, and they perform other functions as entrusted by the central government. ठीक है, उसके साथ साथ हमारे बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पावर्स एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, तो स्पेशली ये पावर्स एंड फंक्शंस का पार्ट ज़रूर देख के जाना। सो उनके पावर्स एंड फंक्शंस ऐसे, दे ग्रांट द अप्रूवल फॉर रिजेक्टिंग, दैट इज एसईजेड को सेटअप करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए,
They grant the approval to the developers and units. They grant the approval for rejecting the proposal of the infrastructure facilities in the SEZ. They grant the license to the industrial undertakings for setting up of SEZ. They suspend the letter of approvals which was granted to the developers if something wrong is found. They are disposing of the appeals if anything is filed and performing such of the functions as may be delegated upon them. Okay, तो वो जरूर देख के जाना. Plus that apart, इस chapter में this one also. So section 34, that is 34, cast upon an authority a duty to undertake measures for development. So SEZ authority की क्या क्या duties है section 34 के हिसाब से. तो 34 के हिसाब से SEZ authority has to undertake certain duties to develop the infrastructure in the SEZ, to promote the exports, to review the functions of the SEZ, to levy the user and perform such of the functions as may be specified. तो ये SEZ authority की duties है. Then इसके साथ साथ ये भी देख के जाना, this one, that is how central government can supersede the powers in the SEZ. So if at any time the central government is of the opinion that the authority is unable to perform the functions persistently and they are making default in the performance of the duties and they have exceeded or abused their powers, or they are willfully without sufficient cause fail to comply with the directions given by the government, then the central government may by notification supersede the authority for 6 months. And provided before issuing that notification, central government will give a reasonable opportunity of being heard to them. Okay, and upon publication of the notification superseding, the chairperson and the members of the authority shall vacate the terms. Even though their term has not expired, they have to vacate the terms. All the past functions and duties will be exercised and discharged by the authority that is called SEZ authority, and all the property will be vested with the SEZ authority. On expiration of the suppression period, the central government may extend the period by further 6 months if required, or may reconstitute the authority. Okay, that's what central government can do in exercise of the power of supersession. ठीक है, उसके साथ साथ ये भी पढ़ के जाइएगा, that is what is the constitution of authority. SEZ authority बनती कैसे, क्या क्या requirement है. So यहाँ पे central government stands shall by notification in the official gazette constitute the SEZ authority, which may be established after the commencement of the act, and they will discharge such functions as may be provided. And provided that in respect of SEZ authority, the authority shall be constituted by the central government, and the authority is constituted, the person shall exercise over such SEZ shall continue to exercise such control, and the authority shall be a body corporate by the name and having a perpetual succession common seals. So ये एक तरह की authority है जो बनती है, and we have discussed in detail also what is that. And the head office of the authority shall be at such places as the central government may decide. The authority may with the previous approval of the central government establish branches. Every authority shall consist of the development commissioner of the SEZ, 2 officers of the central government nominated, an officer of the government of ministry of department dealing with the commerce, and not more than 2 persons being entrepreneurs shall be nominated. Okay, and the term, yes, the term of the officer and the members of the authority and the manner of vacancy shall be as prescribed. The authority will be may associate with itself with such manner and subject to such conditions as may be required. And 1/3 of the members of the authority, will be forming the quorum of the authority whenever the meeting is called for. And yes, no act or proceeding shall be invalidated merely because of any kind of vacancy, defect in constitution or appointment, irregularities in the procedures, and every authority shall meet and at such times and observe such of the procedures as may be required or prescribed. ठीक है, तो ये SEZ authority के बारे में था, so that you can write certain short notes, so quite good length में इसको पढ़ के जाना. ठीक है, then yes, do read this one. What is an offshore banking unit and what is the procedure for setting up? So offshore banking unit, that is आप sea shores को cross करते हुए जो setup करते हो, that kind of offshore banking unit is there. So what is the requirement of that? Well, according to section 2U of a special economic zone, offshore banking unit is a kind of a branch which is of a bank which is located in the special economic zones and covered by the Banking Regulation Act.
Section 17(1) says that for setting up of and the operation of the offshore banking units, an application will have to be made for the OBU license in a SEZ to the Reserve Bank. So Reserve Bank will give you the license for setting up this unit, and Reserve Bank, on being satisfied that the applicant fulfills the requirements, we grant such applicant the license to set up the offshore banking units if required, and gives them the path. And as RBI, they should be satisfied that suitable notification will be given in this respect, imposing the terms and conditions, and subject to the terms and conditions, they can set up this kind of units. Okay, so do read this question, and apart from that, yeah, do read this one also. What are the guidelines to notify special economic zones? So section 5 lay down the guidelines for notifying special economic zones. So the central government will notify us any kind of area as special economic zones, and discharging the function on the act, provided it's for generation of additional economic activity, it's for promotion of exports, promotion of investments, creation of employments, deployment of infrastructure, and maintenance of sovereignty. तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, वैसे SEZ कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, बट प्लीज इंपॉर्टेंट भी है. तो कुछ एक क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे अपने को देख के जाने थे, तो प्लीज एग्जाम के हिसाब से इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा. बट मेरा सजेशन है पूरा चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. स्टे ट्यून्ड.